प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ जी अज आपां विचार करते हैं, गल करते हैं। सानू पता कि चंद्रयान-3 लॉन्च हो रहा वा ते भारत ने पहला भी 2019 में चंद्रयान-2 नूं लॉन्च किया ही। सारा कुछ वधिया हो गया ही। ऑरबिट विच मून के ऑरबिट से सैट भी हो गया ही, पर सैट होने तो बाद की होया जदों उन्हें लैंड करना ही 2 किलोमीटर पिछे वो जरा वा ब्लास्ट हो गया तो वो जिहड़े आ छोटे छोटे पुर्जे जिहड़े आ लभे ही चंद्रमा ते खिलरे, क्योंकि चंद्रमा की उत्तरी ध्रुव ते उतरना कोई बच्चों का खेड नहीं आ। इत्थे इजराइल ने भी 2019 में भेजा ही, वो भी ब्लास्ट हो गया ही। ते पिछले साल 22-23 के शुरू में जापान ने भेजा ही तो वह भी ब्लास्ट हो गया ही। ते जे भारत का हुण लॉन्च किया वा चंद्रयान-3 ते तुहानूं मैं विखाउण लगा वीडियो में सारी वही जानकारी देवांगे। ते वो जे वो लैंड कर गया चंद्रमा के उत्तर पासे ते भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जिन्हें ये जी सेफ लैंडिंग करनी होएगी। 5 अगस्त नूं जिहड़ी आ लैंड जिहड़ी होनी आ उत्थे मून ते वो जिहड़ी लैंडिंग है एक इतिहासिक कदम होएगा भारत का पूरी दुनिया विच दबदबा जिहड़ा वा कायम हो जाएगा जे ये चीज़ कामयाब हो जाती है। हुण असीं सारा वेखने आ, पहलां ते वेखीए भी चंद्रयान-3 विच है की आ। बहुत करीब आके लैंड नहीं कर पाया था, तो अब चंद्रयान-3 हम भेज रहे हैं। लेकिन चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में फर्क क्या है? चंद्रयान-2 के साथ एक ऑर्बिटर भी गया था जो अब तक बिल्कुल सही से फंक्शन कर रहा है, इसीलिए चंद्रयान-3 में वो ऑर्बिटर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऑर्बिटर नहीं जा रहा तो हमारे पास और जगह है और कुछ सामान भेजने के लिए। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया है कि चंद्रयान-3 का जो लैंडिंग रोवर होगा उसकी लैंडिंग गियर और स्ट्रॉन्ग बना दी जाएगी, और उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होगी कि वो लास्ट मिनट अपनी लैंडिंग स्पॉट को चेंज कर सकता है। फ्यूल इंजन और बीच में जो देख रहे हैं लिक्विड स्टेज, तो स्टार्ट में शेड में जो 2 बड़े बड़े इंजन लगे हैं वो है सॉलिड फ्यूल इंजन, और बीच में जो देख रहे हैं लिक्विड स्टेज। तो स्टार्ट में शुरू के 2 मिनट के लिए लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेज साथ में बंद होती है, क्योंकि इस समय रॉकेट आपका हैवीएस्ट होता है। 640 टन का रॉकेट होता है जब वो जस्ट लिफ्ट ऑफ करता है, और इतने भारी रॉकेट को उठाने के लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होती है। किसी भी रॉकेट को स्पेस में ले जाने के लिए आपको मिनिमम स्पीड जो अचीव करनी होती है वो होती है 28,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 11.2 से 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में। ये इतना फास्ट होता है कि दिल्ली से चेन्नई अगर आपकी फ्लाइट 2.5 घंटे में आपको बचा रही है तो ये रॉकेट आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट में पहुंचा देगा। उसके बाद आप जाते हैं क्रायोजेनिक स्टेज पे। तो सबसे ऊपर जो आप देखते हैं वो होता है पेलोड। जिवें कि तुसीं वेखिआ चंद्रयान-3 दे पार्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ चंद्रयान-2 ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ऑर्बिट ਆ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ऑर्बिट ਉਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ 2019 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰੋ ਕੀ ਆ। ਇਸਰੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਸਾ ਤੇ ਇਸਰੋ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਦਾਂ ਚੰद्रमा ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 3,84,440 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। LVM-3M1 on 22nd of July 2019 consisted of lunar orbiter, lander named Vikram and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar and cameras. चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान-3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ऑर्बिट ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ऑर्बिट ਤੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਨ ਦੇ ऑर्बिट 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੂਨ ਦੇ ऑर्बिट 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੂਨ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਉੱਤਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ, ਨੀਓਨ, ਆਰਗਨ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ।
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਰਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ -140 ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਮੂਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸਰੋ ਦੀ ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੀ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਯਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪੈਂਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6500 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਮੰਗਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 470 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ 470 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਟ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ 600 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਮਾਰੀਏ वीडियो। चंद्रयान-3 आपको संक्षिप्त में LVM-3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीन अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S-200 स्टपॉन बूस्टर्स लगे होते हैं जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayan-3 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon.
This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Earth-centric phase comprises of pre-launch, launch, ascent and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। 35 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L-110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए स्टेज इग्निशन इज ऑथराइज्ड। Ignition confirmed. That's a piece of really good news that the तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25, यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayan-3 has attained a major milestone successfully. Chandrayan-3 mission accomplished. Handing over to mission director. Mission director, the LVM-3 M4 Chandrayaan. The launch has also added a feather in the cap. ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।